We'll wait for a couple of minutes for everyone to join in and then we will start.
Hi, so I think let's start it off. Hi, good morning, everyone, and happy Monday. Okay, so was everyone able to do the assignments? Did they face any issues? I got couple of mails this morning, and then I think couple of mails on the weekend. Okay, so quick yes and no that who was able to do, and then we'll look at what all issues you guys got, and then let's try to resolve them one by one. Quick yes and no, guys. And also, it would be great if we all can. What we can do is we can, probably either show our camera for attendance, okay. And if they have any questions, raise your voice. Or if you want to just say yes and no, probably just unmute yourself and tell yes and no. If chat is not working for you guys, okay. Sahil, you had few issues, okay. Okay, Sahil. Let me open your mail first. Okay. I'm attaching my practice notebook. Okay. So, Sahil, which particular notebook? I mean, if you can help me. And we'll have you know, the attendance at the very end of the session. Okay. Around 12:30 every day. So, make sure that you're not dropping off the sessions. Okay. Try to attend full session. If you have any doubts, keep on asking, keep that thing coming. Okay. So I've got response from only three people. Can everyone just quick yes and no if they were able to do assignments? If yes, what all issues were there? Sahil, which was the notebook where you had issues? Okay. 1 minute and opening a notebook. Okay. Ajit, what were the issues you had got? Okay. So what I'll do is I'll create a common folder where all of you can actually drop your files. I have email IDs of all of you, so I'll share that access.
I think I have all the email IDs now. So what you need to do is just create a folder by your name. Okay. So I'll just create a folder for PGA13 batch. Okay. Don't do anything apart from this. Just create a folder by your name and upload your notebooks out here. Okay. I'm just pasting it in the group. Actually, in my third year, and we are going to have our exams, so all our teachers have loaded us with internal assessment. Okay, Chaitanya, but then there were 3 days, and if you're not practicing Python, I mean, you will be left behind. Okay, because it's like a daily practice that you have to do, like without any fail. Do less, but do something. Okay, slicing. Ajit, what was the issue in slicing? Okay, use a slice to print out any three letters from middle of your list. Middle of your list. Okay, yeah. What was the issue out there? Can everyone post their notebooks in this particular group? The link I have pasted. Okay. Okay. No issues, Akash. We'll look at it. Okay, I've changed my operating system, so I might struggle because I've switched back to Windows after like 3-4 years. So mistakenly, because like even Control C and Control V are different, and both the keyboard layouts are very different. So you guys might have to bear with me when I struggle in copying and pasting. Okay. Any other issues? Anyone? Should we do a quick recap of whatever we have covered in Python objects? Okay. Because I want to cover up two things today. One is Python objects, and then the other part is about Lambda functions, which is very important. Okay. So Lambda function is one such utility in data science that you will kind of use it every day. I mean, that's one thing which you can't live without. Okay, anyone, any other issue? Okay, quickly. Don't know how to do it. I was not able to make out the value. Put. Okay. My native question. Will you be able to teach something about list comprehensive? List comprehensive or list comprehension? Like, I didn't get exactly what you mean by list comprehensive. And what about others like Amit, Paz, Gaurang, Jaskirat, Rupika, Samrad? You guys are done with everything? No doubts at all? So, Ajit, how you need to do that is you have to take the length of the list and then find the middle of it.
Okay. Are you like kind of understanding? Okay. So let's first cover the first issue that one of us had. Okay. Okay, Akansh, you have put it your notebook. So once you put it out here, what it helps me do is I can just actually click it and try to open it with either with collab. Why I'm not getting collab? Let me check. So I'll just add this particular thing. Okay. So I can't just to tell you out like if you have a let's say 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, let's say these are the six elements. Now to find the list of the length, you have something like ln lt. Now what will be the middle position? Okay, what will be the middle position out here? So middle position will be your length of list. Okay, divided by 2. And if the length is whatever like 5, then you want something like a rounded value, so I'll just convert it to int. So every time I give a list, I'll have the mid of it, right? Now what I can do is from that middle position I can print one element to the left, one element to the right, right? So what I can do out here is 2 to 4 I can do. Okay, because 3 minus 1 and 3 plus 1. Similarly, if I want from, okay, zoom. Is this much enough? Ajay, does this answers your question? Like, was I able to get the correct question? If I may ask. Cool. So there are multiple ways of it, I will still say. Okay. I mean, I can also try with something. So you remember the format. Okay. What was the format? We had start, end, and then step size also. We had something like called a step size, right? If you all remember. This plays a very important role. Okay. So if you have to, there's a question, print middle elements, but only print it on even position. I can do with this particular thing again. So probably between 2 to 4. Okay. So I'll have only one element because I've given it a 2 parameter. What if we take output from user and list value is even sometimes and could be odd? We need only 3 elements. 3 elements as an int will round it to next position. Yeah. Okay. So instead of int, let's say you don't want int, use round. Okay. In case you want to have more precision, like int will do even for, let's say, something like, 10 by 10, no, 11 by 3. 11 by 3 is 3.66, right? So if I do a int of it, okay, it will be 3. But if I do a round
of 11 by 3, it will be 4. So it's up to you. You want to move go around to a next position or not. Why I did int is because I wanted whatever is completed. I didn't want it round in that case. Okay. So it will depend on what you want to achieve out there. Okay. Let's take up the next particular thing. Sahil Mathur. Sahil, can you also upload your notebook so that we can have a look? Just upload it in that drive only. I'll still download your notebook so that we can see it quickly. So round what it does is that it will change, basically simple round ऑफ होता है ना, राइट? अब जैसे 2.4 का राउंड क्या होगा 2, 2.5 का क्या होगा 3, राइट? इंट क्या करेगा, वो सिंपली लास्ट वाला पार्ट इग्नोर कर देता है. ओके. अच्छा, एवरीवन इज फाइन विद मी टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, राइट? Because like I just want to make sure no one is there who doesn't understand Hindi, so that if that is the case, I'll just only switch to English. So I uploaded my notebook and I was not able to do the third and the fifth question. Okay. So what? Okay, let's do this particular thing. Since this particular folder will have notebooks from all of you, okay, if there's a particular question that you are not able to do, discuss in that particular group. Whosoever was able to do, just try to connect with him or her, okay, and try to learn how did he or she do. Okay. So that way what we can cover up is like you guys can collaborate and learn, first thing. Secondly, we can come up with issues which are common to everyone. Okay. Can we all do that? Simple, like you guys might have some groups and all, right? Just try to cover it up. Okay. So I'll cover few things today, here and there. Okay. So Sahil, question 11. Okay, write a code to extract each digit from an integer in the reverse order. Okay. Okay. What are you kind of trying to do out here? Okay. There are simple ways to do. So, given an integer, what it is asking you to do is extract the last digits. Okay. So whenever you have to extract last and first digit of an integer, what all you can think of? Okay. Can anyone think of it? So whenever I'm dividing by 10, can you see I am excluding the last digit always? Right? And what is the function which we have for remainder? This is for your actual value. Okay. And you had a function for remainder also. Can anyone tell me quickly? Remainder का क्या होता है यार function? Simple, जल्दी. Guys, be active on chat, and all of you, if you are, not able to focus or all, please switch on your camera so that, I can get a feedback from there. Yeah, percentile. Okay. So what you need to do is, in case of text, okay, you can just traverse it. Okay. So one way is convert this to text. Okay. And just traverse it. So for example, now what I can do is str of int, sorry, str of your num.
right? So if I do something like that, okay, let me run this particular code. Okay, then all I need to do is traverse from the end. Okay, this is one way, convert it to string, then ये -1 -2 ऐसे read on करते जाना. Yeah, okay. The other way is which actually earn you brownie points in an interview, or ideally this is the way to do, is that you find the remainder and then keep on converting. So all I need to do is for while जब तक मेरे num की वैल्यू, ठीक है, is greater than 0. ओके, देन क्या करो इसमें, हर बार मुझे क्या करना है, जो प्रिंट करना है वो परसेंटाइल वाला करना है. तो प्रिंट नम, हर बार मैं 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेता जाऊंगा, और हर टाइम मुझे नम को एक एक 10 वाला हटाना है, विच इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर. Cool. This is the way which you should ideally do for any number. Okay. Converting it to string is a hack. Okay. अच्छा, कभी इंटरव्यू में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, okay, for future reference, always don't restrict it to one approach. Give him one approach, then tell him that actually this could have been done in just, you know, 2 lines of code if I would have done something like this, right? And all I need to do here was actually print I or in. So I have the similar result. Okay. Forget this particular code. This is like a short form of writing things. I'll convert it to something which all of you can actually understand in a better way. Okay. Same thing. Okay. Probably here we have 3 lines, kind of similar out here also. And if I would have just done this, this would have been just 1 or 2 lines of code. Okay. Okay. Then you had eggs, Python, exercise 13, print multiplication table from 1 to 10. Okay. Why is this difficult? ये तो you have done. Chaitanya, let me check Chaitanya, your notebook. Chaitanya, I can't see any files in the folder you have shared with me. Can you see if the file was uploaded? Let me refresh then. Chaitanya, it's still blank. Check once. Okay. Because I can see for everyone else. Or you can drop me a mail. Chaitanya. Okay, like drop me a mail. If in case I get it, I'll check it. Okay. If uploading is not working, but I'll prefer uploading. Okay. Ajit, any doubts that you have? I think we have covered for Sahil, we have covered for Amit.
Okay. In a loop, how to print in next line or length. So every time you want to give a space, use \n. Every time you want to give a tab, use \t. Okay. Just to give you an example. So let's say for I in range 10, as of now, it will be something like this. Okay. Now I want to print I 2 times, let's say, just to showcase. Now, every time I print this, I want an extra line to be added. So what I'll do is add this \n. What this \n will do, it will add a particular blank line. Okay. So by default print, it moves to the next line. If you give \n, it will move again to a next line. Okay. And if I just do a blank print, so you'll find 2 spaces now. Okay. So either of them works. So just know that every print statement will move the pointer to the next line. Okay. And if you are giving it, more and more print statement, it will keep on moving. Okay. And this is the question in the, Python quizzes. Okay. Now this is about your next line. Okay. And this next line can be used anywhere with anything. Okay. Just to give you an example, I want to print Ayush, and then I want to print Kubba in the next line. Okay. Cool. If I want to even add more space, I'll give it something like \n. So it is not treated as a string. Okay. Every time it will be like this. Now instead of n, I wanted to tab. Like Ayush and Kubba should have a tab delimited space. Okay. So I can do that. I want 2 tabs. I can actually do that also. I want 3, 4, whatever n number of tabs I can add. Fine. A tab cannot be print horizontally, right? I mean, it will be like this only, right? You want tab with first in the word below. Like, I mean, it will be always like this only, right? Acha, you want to print each letter. Okay. Is it something you want? AAYUSH. So in that case, let's say I want to do that, and I have so let me define a name, which is Ayush. Now what you're asking me to do is print each word horizontally. So one thing I'll do is I'll first split the name, okay, and get the part. Now for each thing in the part, simple for I in part, since it's also iterable, right? We remember, and we can print Ayush Kubba. And then let's say I want to have a space between the first name and so I can just add a blank statement out here. I'll have something like the output of the next loop to be printed horizontal. Okay. But it's still not get, like, is it something you mean like this? I'm hoping. Or you can just unmute yourself and tell me. Acha, you want to print everything like this. Okay. Like, let's say you want to print Ayush Kubba 6 times in, okay, all together. Acha. So probably I kind of got your question. So what I can do out here is, why do you need to use loop then? Does this solve your query?
or maybe just 5 times. Yeah, 2 times, whatever we can do. But see, you can't do this in loop. The reason is every time a loop is finished, okay, this, so just to give you an example, जैसे ही प्रिंट का ये लास्ट वाला ब्रैकेट आता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, सिंपल. ओके, 2 5 whatever we can do, right? 5 number of times, 3 number of times. Okay, but if simple constructors, if you have this ending bracket in any loop, if else anywhere, you will move. So if you have to do anything, you have to do it inside. Okay, so what I can do is I for I in, let's say, now, okay, if I have to print character wise, I'll do something like this. Okay, but then you will have to have it in one particular thing, else you won't get. Okay, okay, cool. Okay, so we'll start with it. What is just to add space? So basically, if you remember, I was doing something like this, right? So just to separate out this particular word from this. If I'm not doing, it will be a bit clumsy, no? Because next word will start printing right from here. So either I add some space here or add some space here. Okay. Just for viewing purpose, Ajit. Okay, great. Everyone with me till now? Okay. So what we'll do today is we'll do a quick revision of whatever we covered in the last class. Okay. And then from there, we will jump to lambda functions. Okay. So I have around 80-90 slides. Okay. So we'll be moving quickly for all the slides which we have covered. Okay. So feel free to interrupt in case you have any doubts. Okay. And in case someone feels the speed is slow, let me know. I can speed it up really fast. Okay. Was everyone able to do those basic assignment, go through that basic assignment notebook on GitHub? What's the difficulty out there? Simple, यहाँ पे GitHub पे आपको जाना है, पॉक करना है, डाउनलोड करना है. That's the only 2 steps you need to do. See, I can just see some update from Manav. That's the only person I can see. Rest so I can see 2 people from probably our group who have started it out, but none of you have actually taken it. You need to fork it, okay? Create and make changes and update your changes. Please do that. This notebook you have to do. If not, just download it and start doing it. If not something else, go to this particular blog. Okay, read about it. That's the only thing that you need to do. Okay, it will have everything that we have kind of covered. Okay. Okay, so I wanted to cover few things before we move ahead. Okay, so syntax wise, how Python works like. Okay, so her programming language, every programming language has some kind of syntax. Okay, so syntax is nothing but the way you write. Okay, so for example, English में हम कैसे लिखते हैं? At times you write, first letter of a word as capital. Okay, you have some particular format to it, right? Similarly, Python has this particular format. Okay, so Python may, the good thing about Python is that you don't need to specify brackets. Like if anyone has worked on any other programming language, which is very few in our case,
most of you already, I mean, most of you are first time programming. Okay. So for all those people who didn't do, okay, in other languages like in C and all, you will always have to write so many brackets just to mark the start of the loop, end of the loop, where is the loop beginning, where is the loop ending. So every time you will have to keep a count of how many brackets you opened, and then you have to close those brackets. So it's very difficult. In Python, it's very simple. You just need to tell how many spaces are there. That's why for every block of code, we have spaces. जैसे for loop end होता है कॉलन के बाद, तो कॉलन के बाद हम एक टैब का पूरा स्पेस देते हैं, मतलब 4 spaces, right? हर कॉलन के बाद we'll have another set of tab. Okay, that's what we did out here also, right? जैसे ही ये कॉलन आया, we have this. ठीक है, तो इसमें क्या होता है पाइथन में, ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन होती है ये डिटरमाइन करती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया, अब एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा. ओके, सो इन हाउ, ओके, so if I am writing hey, so hey will be printed how many times? And how many times will okay be printed? Hey will be printed how many times in this particular loop? Okay. And how many times will you see okay being printed? So yeah, okay will be printed from 9876 with every element of a loop. And hey will be printed once. Okay. So the difference between the two was the position. Both are print, both are coming while के बाद ही आ रहे हैं ना सब कुछ. ठीक है. बट द ओनली डिफरेंस इज ये वाइल के अंदर है, और वो कैसे पता चलता है, वो इस स्पेस से पता चलता है. सो पाइथन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये स्पेस है. अगर मैंने एक कम कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे तो मुझे उसमें ही दिख जाएगा रेड किया हुआ कि इट्स गलत, तो इंडेंटेशन एरर आएगा. ओके, सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द कॉमन एरर इन पाइथन, टेल अबाउट इंडेंटेशन एरर. ओके, द मोस्ट कॉमन एरर. ओके, cool. Now, if I have proper indentation, I can write a lot of things together. Okay. Does this answer anything or not? So can I write something like, okay, while num is greater than 0, print num. Can I do this? Probably with the 1, 2, 3, 4. Okay was there in the output. So what I've done out here is, if you see, I have been updating num. Okay. So the reason is, let me show it to you. So every time I have to initialize, else it will be, okay. A nice thing you pointed it out. Okay. Because I am reducing the value of num every time, right? Changing the value of num. So it becomes 0. Okay. So even with this particular thing I can do. So if I have proper spaces, I can do. Okay. If I'm running something like this, then also I can do. Okay. But if I have multiple statements, then I'll get a syntax error. Okay. Even if I have delimited it. Okay. So I can write things in single line also with colon if I have only one statement that I want to execute. Okay. Great. Okay. Let's
move it. Okay, let's quickly move. So list, we covered it up. Okay, list can be heterogeneous. We can have list of string. We can have list of int. Okay, and everyone, please be you know focused on the screen. Okay, क्विक रिवीजन है, ठीक है, इसलिए बहुत स्पीड से चलेगा. But it's a nice way for all of you to recap. Okay, so list are heterogeneous. We can have int, string, everything together with it. List can have duplicate values. One can be repeated 10 times, two can be repeated 20 times, doesn't matter. It is mutable, that means it can be changed. मैं first element में 1 की जगह 2 को डाल सकता हूँ, right? And list, all the list elements are separated by comma and everything is there in parenthesis. Okay, list is just a very common data type that you will use in Python. Okay, and that is true for programmers as well as for data analysts and data scientists, and even for ML engineers and AI engineers. Okay, okay. So list can append elements, it can concat and get index, it can slice, it can find min, max, length, and even do in, not in. Okay, we saw all these examples. लिस्ट क्रिएट करनी है तो सिंपल है, राइट? कॉनकैट एंड अपेंड के प्लस कर दोगे तो कॉनकैट हो जाएगा, अपेंड के लिए अपेंड फंक्शन. सॉर्टिंग, सॉर्ट फंक्शन. वी हैव सॉर्ट एंड वी हैव सॉर्टेड. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड फंक्शन? एक फंक्शन इज प्रोडक्ट्स डॉट सॉर्ट, द अदर फंक्शन इज, इफ यू ऑल रिमेंबर, sorted. Okay, what is the difference of these two functions? Yeah, I can't just park that question, I'll answer that. Okay, so one is pop, one is remove, then you can delete an element also. So there are different ways you can actually delete an element from the list. Okay, yeah, sort is a list function. Okay, cool. Then let's move on. What is the four? What is the question mark? Okay, what is the fourth? Yeah, I'll cover it. So don't worry. We'll have all the methods kind of listed around. Okay. So this is how sorted. Okay. Now checking the presence of an element, we can use in and not in, right? Which we just saw. How we can iterate from an list elements? Just use a for loop. Okay. Okay. Now, if you have to find anything, find the max and the min values. How we can do max, min, simple goes. Okay. All these, most of these functions are not possible when there are heterogeneous list. Okay. It either needs everything to be int, either everything to be float or integers. Okay. So basically either numbers or strings, only one particular thing of that. Okay. Can list have Boolean also? Quick yes, no, everyone. सिर्फ आकांश को आंसर नहीं करना है. Everyone else also has to answer. Okay. Just that you haven't asked any question till now. Okay. So I'm assuming like you are one person who knows everything. Okay. So जो भी नहीं कर रहा है, that's the assumption I have. Either they are understanding everything or they are not understanding anything. So if you are understanding everything, it's good. I mean, I'm very happy with that. But if you're not understanding anything, that's really bad if you are not bringing it up. Okay. So please bring it up. Okay. Okay. So
Heterogeneous list में a lot of things are not possible. Okay, now you can clear a list using clear method. Okay, and now all the elements are removed, but the actual list will still kind of exist. Okay, now we can add the elements using append function. Okay, you remember making a copy, dot copy, and just doing a direct assignment. What's the difference between the both? Like what I can do is retail products, yes I am. In new product list, what I can do is just refer this particular list. So I have a list named A. Let's have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So what I did with B is equal to A and C is equal to A dot copy. Okay. Now what I did is B dot append 10. Okay. Now I am printing A. You guys have to answer this. What will be the output? Quickly. And when you are typing it, okay, try to use control and enter so that you can copy the whole output in one go. Quickly. So मैंने क्या किया? B में डाला A, ठीक है? And I'll slightly change the question also here. C is 1, 2, 3, 4, 5, 6. A and B are that's fine. What will be the case in the second scenario? Everyone gets this. Why this will be the same, right? Why we are getting these two values? Although I have just added in B, it is getting added in A automatically. Why? Because I have done this particular assignment. When I do this assignment, okay, what it does is it is actually changing A only. However, if I do this particular assignment, okay, it doesn't change the A value. So even if I do something like C dot append 20, okay, it won't affect my A. I'll have 20 only in the C value. Okay. Acha. What will this particular thing have for all? Cool. Everyone gets these two things? Great. This is very important. Okay. Okay. So we can add new elements to a list. Copy is to get a shallow copy. And if we are not doing, we are doing a reference copy. So always know the difference between shallow copy and a reference copy. Okay. Cool. Count करना है तो simple dot count method we can use. Okay. Then extending a list, we can use extend method. Okay. If I have to find a position of an element, what I can use is dot index method. Okay. Everyone fine till here? Cool. How to insert a new element? Dot insert. And with insert, what you can do is give the position. With append, you can only add at the end, but with insert, you can add using insert, right?
and you can give the position also. Now note this position starts from 0. Okay. Cool. So pop method, remove method, and third was the delete method. Okay. With all these methods, you can remove it. Okay. So pop simply position दे दो निकल जाएगा. ठीक है. Remove में you will give what? The name. Okay. So the difference between pop and remove you know now, right? In one you give the position, in the another you are giving the actual value. Okay. Everyone clear with this, right? And then we have one more method which is called delete. Okay. Can anyone try it out and tell me how to use delete? So just del operator is used. Okay. Just try it out in your notebooks. And I hope that everyone keeps their notebook open in the class. If not, please do. Okay. So delete, it's kind of not there in this particular notebook, but you can do. Right. So simply a का element है जैसे 2. Okay. Sorry. A is caps. Acha. So Python is case sensitive also. So small a and big A makes a difference. So if I just do DLA, then print E. Okay. So the element. Okay. Let me print the list first. So now if I print A, 1, 2, 3. So when I did del A2, which is 0, 1, 2, which is third, 3. So 3 should be removed. Okay. Can anyone think of the last way out? So what all we have covered, and you already saw in the slides actually. So one is your pop, one we have removed, one we have del. The last one which we covered initially is clear. Right. Cool. That's why I wanted all of you to arrive at it. Okay. These are the 4 methods that you have to use. Cool. Okay, now let's move on. So how does slicing works? Start, stop, and what is the step size? So if I am doing a step size in terms of negative value, it will begin from the back. Positive value begin from the start. Okay. Basic example है 0 से 3 कैसे जाएगा, last element कैसे जाएगा, ठीक है, third element from last. Okay. So here what I'm doing out here is starting from -3 and ending to -1. Okay. So -3 to -1. Okay. Here I can write starting from -3, ending from -1, and in the step size of 2. Okay. And if once I write -2, it will begin from the back. So just keep in mind, step size positive will move from left to right, negative will move from right to left. So pop and delete takes index only. What is the difference between the both? Okay, so it's kind of very similar. Okay, so del is something which is used across Python. Okay, so what del does is it goes to memory and deletes that particular value. So if you have to delete a list, you'll still write del and that particular list name. So del is a Python method. Okay, and pop and remove, all these are list methods. Okay.
Now, another advantage of using del is you can remove multiple elements. Okay, with remove and pop, you can remove one by one, right? And also, by removing pop, okay, the only thing is that you can still use that, the value you have popped and put it in some other variable. With del, you can't. Okay, so just to give you an example, so I have this a value, right? So if I do a dot pop at third position, let's say, which is 4 value, so I can put it in this particular variable. I'll have 0, 1, 2, 3, which is 5. Okay, and my a will 5 will be removed. So I have actually captured my value. However, now with the same thing, if I do a delete, so now my a is this. Let's say I'm deleting anything which is at 0 position. Okay, you won't be able to do that. So it will drop the value just like that. You won't be able to get to that value again. That answers your question, Ajit, right? Cool. Okay, so negative, always negative indexes from right to left, positive is to left to right. Okay, we have covered till list. Now what is tuple? Okay, now tuples and list have one basic difference, which is about mutable and immutable. Both are heterogeneous, both can have duplicates, both the elements are separated by comma. Just instead of square brackets, it's just the brackets, right? So what's the difference? What we mean by mutable and immutable? Okay, let's see it out. Okay, so firstly, let's talk about what all operations are there. Okay, in, not in, concatenation, min, max, length, indexing and slicing all works very similar to what you have in a list. सिंपल है, हमने भी heterogeneous list tuple बनाया हुआ है. Instead of bracket you just give square brackets की जगह normal brackets दे. Okay, but what is the difference? I mean, I can do all this. Okay, the other thing I can do, I can do all the sorting and everything. I can use the sorted method. It doesn't have that sort method by itself. Okay, so list has a sort function but a tuple doesn't have a sort function. Okay, but we can use sorted in both. Okay, so this is also one of the question asked in a quiz. What is the difference between a list and a tuple? So there are a lot. At least try to remember a few. Okay, so sorted returns a list even if you passed a tuple to it. Okay, so sort जब होता है, okay, sort, okay, it will return a list, not a tuple. Can you get a hint why we call it immutable? So immutable and mutable is nothing. Immutable is something which cannot be changed. Mutable is something which can be changed. Okay. What we saw in a list was it can be changed. Even if I assign A को मैंने जैसे B में assign कर दिया, ठीक है, अब मैं B को भी change करता हूँ तो A भी change हो जाता है. तो we are very sure कि हाँ list तो mutable है, right? It changes itself. Everyone with me, right? List are mutable, yes or no? We all agree why they are mutable? Quick yes, no. Yes, yes. Only one, two, three yes. For else it's no. Okay. One more yes. Cool. So tuples
Since they are immutable, you can't change the original values. ओके, हमारा ओरिजिनल था आइटम प्राइजेस 8222, ठीक है। अब मैंने उसे सॉर्ट किया, ठीक है। सो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट बाय आवरसेल्व्स ओनली। सो वी हैड अ tuple. I'll just name it by TP. I'll add some random values. Okay. So if I print this tuple, this is like this. Now, when I'm sorting it out, so you see a change from this particular value to this, right? So what does this indicate? That my originally, even if I go and print TP, it will still be this, but it has changed. Okay. Now, what if I try to do something? Let me try to be more smarter here. What I try to do out here is assign this to a x. X is was a list. Okay. Now, Aja, you can convert a list to a tuple and tuple to a list. Okay. So if I just pass it like this, it will again become a tuple. So now what I do, I tried to be smart. मैंने सॉर्ट किया, एक लिस्ट में डाला, लिस्ट को दोबारा टपल बनाया, फिर उस टपल को नए वाले से असाइन कर दिया. So now you see the values has changed. Can you tell me, like I तो told you guys it's mutable, sorry immutable. इस वैल्यू से ये इस वैल्यू पे कैसे चला गया? Just think about it and tell me. Cause we have converted it, but I just said that list are immutable, right? Even if I have changed, I changed it in the first thing also, right? मैंने तो उससे पहले भी चेंज किया. कोई एनी कोई तो रफ केस ले सकते हैं, राइट? Any rough case is a good case. Cause we anyone else who want to take it up? Okay. So what happens is, let's say we created this tuple. Wait. So we created this tuple, which was whatever 23 minus 1. Okay. So once we have created this tuple, okay, we have something called storage. This is nothing but your memory. Okay. This is nothing called memory. Now with memory, what it does is, इस memory के अंदर, ठीक है, I'll have these slots. This is nothing but, so the way you organize your books in a
इन अ शेल्फ, जैसे हम शेल्फ में ऑर्गेनाइज करते हैं बुक्स, सिमिलर चीज है, ठीक है। ये क्या करता है कंप्यूटर, इसको जाके शेल्फ के अंदर रख देता है। तो यहाँ पे इसने ये टीपी, टीपी नहीं एक्चुअली ये वैल्यूज रखेगा। तो इफ आई हैव टू राइट इट आउट हियर, what it will have is these values, which is 23 and -1. Okay. And what other information it will have is this is being referenced by something named TP. Okay. Now what we did, we sorted this. We sorted this and it became -1, 3 and 20 as a list. इसको हमने दोबारा टपल में कन्वर्ट किया तो -1, 3, 20 बन गया. Now once this is created, I said again TP को ना ये वैल्यू असाइन कर दो. तो अब क्या होगा मेमोरी में, दिस विल रिमेन एज इट इज. ओके, व्हाट इट विल डू इज इट विल क्रिएट अ न्यू, एक नई बुक बनाएगा. यहाँ पे वैल्यू आएगी -1, 3, 20. और जब ये टीपी यहाँ पे जा रहा था ना, इसको हटा के अब ये जो टीपी का ये पॉइंटर है वो इधर आ जाएगा. तो ये पॉइंटर हमारा हट जाएगा, ठीक है. जस्ट डू, इट विल बी डिलीटेड. ओके, एंड दिस न्यू पॉइंटर विल कम इनटू प्लेस. ओके, which will point it to this particular location. So my this is as it is अभी भी memory में, but it's just staying there. उसका कोई नाम ही नहीं है. So I can't ever access it. मैं दोबारा कुछ एलिमेंट एक्सेस करता हूँ, अगर मैं एक और बनाता हूँ टपल विद द सेम वैल्यूज, तो एक नया वैल्यू यहाँ पे नहीं डालेगा, वो इसी के पास चला जाएगा. सो लेट्स से कल को मैं एक और बनाता हूँ विच इज वाई, विच इज नथिंग बट 23 and -1. So instead of creating a new value out here, it will go directly this particular value, क्योंकि ये पहले से exist कर रही है, ठीक है. That's why it is immutable. अभी तक ये destroy नहीं हुई ना. लिस्ट में क्या होता है, इधर ही चेंज हो जाता है. सो अगर ये लिस्ट होती है हमारे पास, ओके, सो नाउ लेट्स से वी हैड अ लिस्ट. सो लिस्ट में क्या होता, जैसे अगर मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स थे, ये मेरा मेमोरी है, दिस इज 1, 2, 3, लिस्ट होता तो यहीं पे ऐड हो जाता. जैसे मैं अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड 5, अच्छा वो जाएगा इसी में 5 अपेंड कर देगा. बट विद टपल दिस थिंग इज नेवर चेंज्ड. ओके, इट विल क्रिएट, तुमने कुछ नया डाला, जैसे इतने के बाद मैंने एक और एलिमेंट डाल दिया, तो यहाँ पे एक और नया बना देगा, बट इट वोंट चेंज द ओरिजिनल वन. दैट्स व्हाई इट इज immutable. Okay, and what if we want to dit this tuple after ditch or delete, use del. Okay, if you don't use del, by default when you close the session or so, memory wise वो क्या करता है, discard करता रहता है, right? So there is something called garbage collection, जो I won't confuse you guys, ठीक है. तो garbage collection is something very similar. जैसे हमारे घर में we have a dustbin, right? We keep on throwing things in dustbin, and maybe in a day or two someone comes to pick the dustbin, right? ऐसे ही होता है normally households में. Similar thing memory computer भी करता है, वो डंप करता जाएगा ये सारी values को जो use नहीं हो रही डस्टबिन में, और after some time these are actually thrown out. जब तक डस्टबिन में हम निकाल सकते हैं, जब तक नहीं है तो निकल जाता है, ठीक है. Everyone is fine with this construct, right? Okay, so this is what we mean by mutable and unmutable. Cool. Any doubts, anyone? Yes, no, clear है या नहीं है, ठीक है. जस्ट सिंपल टर्म्स में बताऊं, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, ठीक है. ओके, नो मीन्स नॉट क्लियर, फाइन. जस्ट टू पुट इट सिंपली, ठीक है. टपल क्या होते हैं, टपल जैसे ही तुमने बना दिया वो फिक्स हो जाते हैं मेमोरी में, ठीक है. उसका असाइनमेंट चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, बट वो मेमोरी में हमेशा रहते हैं, ठीक है. तो जैसे तुम्हारे पास लेट्स से यू ऑल हैव अ सिबलिंग, ठीक है. उसका नाम था लेट्स से, द सिबलिंग नेम इज लेट्स से आयुष. ओके, नाउ तुमने हमेशा उसको आयुष बुलाया, ठीक है. वन डे यू डिसाइडेड, यू यू नो वांट टू change its name. Okay, but that person will remain the same, right?
अब मैंने आयुष की जगह उसका नाम पीयूष कर दिया, राइट? आई विल कॉल हिम बाय पीयूष, बट द person still remains the same, right? We haven't changed that person. Okay, so that is nothing but your immutability where you can't change the actual thing. ठीक है? इस केस में क्या हो रहा था, वो मेमोरी के केस में, कि मेमोरी में जो था ये एज इट इज रहा। ठीक है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया। अब पहले इसका नाम टीपी था, मैं उसको वाई से एक्सेस कर रहा था, राइट? और टीपी को मैंने किसी और को दे दिया। ठीक है, so you, let's say your name is A, ठीक है, you have your siblings B and you have C, okay? And then let's say a new baby is born in your place, okay? उसका नाम है D for now, ठीक है? Now what you do is, एक का नाम सबसे बड़ा था, वो एज इट इज रहा, ठीक है? आफ्टर ही ग्रू अप लाइक 5 years, ठीक है, बड़ा हो गया, you decided that you won't no longer call him D, you will call him by some name E. And now D तो वही रहेगा ना, E, अब D is being called by something called E, ठीक है, नाम चेंज हो गया, but that person will still remain the same, right? So this is nothing but immutability, okay? अगर मैं कल को C को F बुलाने लग जाऊं, तो मेरा C बंदा तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, it will still be the same, right? That's the whole construct of immutability. टपल्स में भी क्या होता है, once you have defined a tuple, you can't change it, ठीक है? You will have to create a new tuple if you want to add. जैसे फैमिली में अगर कोई नया बंदा चाहिए, तो तुम्हें ये थोड़ा ना, अगर मैंने इसका नाम ई कर दिया, सी की जगह ई कर दिया, तो दिस इज अ न्यू पर्सन, दिस इज स्टिल द सेम पर्सन, राइट? If I have to, I want a new person, I'll either, ask my parents to have a new sibling, or maybe adopt or anything, right? Or bring in my cousin, anything, right? Then I'll get a new person. But if I'm just changing the name, that is not changing the person, right? Cool. Everyone got this construct? Simple family के ऊपर चले जाओ and you will understand it. ठीक है? फैमिली में है, ठीक है, 4 लोग हैं, ए बी सी डी। अब कल को तुम बी को ई बुलाने लग जाओगे, तो नया बंदा तो नहीं आ जाएगा, ठीक है? नया बंदा तुम्हें चाहिए तो बाहर से ही लेके आना पड़ेगा और डालना पड़ेगा इसके अंदर, राइट? एंड नाउ दिस विल बिकम एफ, ठीक है? जस्ट बाय चेंजिंग नेम यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है? सो दैट्स द सेम थिंग। अब कल को इसको भी ई बुला रहे हैं, इसको भी ई बुला सकते हैं ना, इट्स जस्ट द नेम। कूल। एवरीवन विद मी टिल हियर? डू यू वांट टू टेक अ ब्रेक? Faz is the quickest to reply yes this time. ब्रेक के मामले में फैज हमेशा सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, ओके? सबको ही चाहिए, 1 2 3, 3 votes out of 10 12 people, okay? So let's do one thing, okay, before we leave for the day, I mean take a break. Just a second. Yeah. Okay, that's fine. Let's take a break for 5 minutes. Let's be back by 11:25. Okay.
Is everyone back? Quick yes, no? Okay, let's quickly resume. Okay, repeating the tuple elements. So the way we do it in list or a string, simply use star operator and you will be able to repeat the elements. Okay. And by tomorrow, all of you, what you need to do is, you all have these slides, right? Okay. The only intent is whatever code is there in the slides, run that code in your notebooks. Okay. And you need to upload those notebooks on GitHub. Okay. And if you're not even able to upload it on GitHub, upload it in the folder which I have given. Okay. And organize the folders in such a way. Okay. So I'll just tell you, this is the fourth class, right? Yeah. So what we will do is for every class we'll have a folder. So let's say this was the third class. These assignments were from the third class. So I'll just move all these folders right here. And here I'll create a class for. Okay. So all homeworks and practice will be there. Okay. Now what at the end, like when we cover the full course, तो आप लोगों के लिए क्या होएगा, पूरा ये फोल्डर आप लोग डाउनलोड करना, ठीक है, एंड यू विल हैव एवरीथिंग आउट हियर, ठीक है. तो कभी बिकॉज इन नाउ यू विल बी लर्निंग मशीन लर्निंग, ये सब बहुत कुछ एडवांस टॉपिक्स, राइट. बट फिर जब इंटरव्यूज दोगे तो तुम्हें यही नोटबुक्स काम आएंगे, ठीक है. एंड द नोटबुक्स विच यू क्रिएट विल बी द बेस्ट वंस ऑलवेज, ठीक है. किसी और की नोटबुक नहीं आती, बट जैसे अगर तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ डाउट है, तो वो सब चीजें क्लियर हो जाती हैं. ओके. Moving on, concatenation simple plus operator. Okay, just same operation use करना, heading डालना tuple and just keep on doing this practice. Okay, at one side open the slide, ठीक है, maybe in your mobile open the slides and with your laptop do the coding. Okay, जहां पे भी डाउट आए वहां पे सिंपल हैश टैग, ये मतलब कमेंट डाल देना doubt this, and then we will discuss in the class. When you're discussing in the class, what you can do is just do a control F in your notebook. Acha, doubt. ये piece is doubt. So you will remember also. Okay. And post the doubts in the group. Do you guys have a group or not? ठीक है, नहीं है तो बना लो, ठीक है. और अगर है तो well and good, ठीक है.
कूल। हाँ, तो उस पर डिस्कशन करो कि ये क्लास में ये स्लाइड पे ये रन कैसे करना है, ठीक है। दैट विल बी योर फर्स्ट थिंग. So if you, even if you are covering these slides, these are very good slides. I mean, so I have taught in many institutes and all. Okay. And I'll be honest, like this is like one of the exhaustive lists you will have, at least in terms of Python. Okay. So try it out. Cool. Okay. Now checking the existence of an element in, not in, similar to what we have in a list. Okay. Iterating again for loop. We can use while loop like I saw. Okay. Counting करना है, simple length function works everywhere. So most of the function are same, max, min. Okay. Now, again, same thing, mixed data types, you can't. Okay. Tuple is immutable, so you can't modify it. So if I am trying to delete, it won't work. I am trying to add, it won't work. Right? The only thing will work is when I change this price and let's say I create a new tuple and assign it to the same name. ठीक है, इट्स एज गुड एज एडिंग। तो जैसे मैंने फैमिली में एक नया बंदा ऐड करना था, मैं बाहर से एक बंदा लेके आया, उसका नाम भी मैंने आयुष रख दिया। ठीक है, डजेंट मीन कि वो वाला आयुष और मैं आयुष सेम होंगे। ठीक है, एवरीवन गेट दिस कॉन्स्ट्रक्ट। जब भी ये टपल और इम्यूटेबल म्यूटेबल आए, थिंक ऑफ अ फैमिली, एडिंग अ न्यू मेंबर टू अ फैमिली, चेंजिंग द नेम्स। ठीक है, एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इम्यूटेबल म्यूटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। घर जाके दोबारा पढ़ना अबाउट म्यूटेबल इम्यूटेबल। ठीक है, नहीं समझ में आता तो कल दोबारा पूछना। ठीक है, बट डू रीड अबाउट इट। ठीक है, सिंपल टर्म्स में म्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल होता है जिसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, राइट, कूल। नाउ यू कैन हैव अ लिस्ट विद इन अ टपल। टपल के अंदर लिस्ट हो सकती है, लिस्ट के अंदर टपल हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कल को टपल वो बनाता हूँ, ठीक है, सो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट सो दैट वी कैन ट्राई. सो आई हैव अ टपल 1 2 3. टपल के अंदर आई कैन हैव अ लिस्ट ऑल्सो. ओके, सो इफ आई एम जस्ट आइटरेटिंग थ्रू दिस टपल का नाम, लेट्स से वी हैव tp2 for I in tp2 brand I, so I'll have a list. ठीक है, अब लिस्ट के अंदर टपल बना सकता हूँ मैं? हाँ, बना सकता हूँ। अब मैं इसी को ही ऐसे बना देता हूँ, दिस इज 1 2. So what I've done is now this is a list tp2. I've created this a list. लिस्ट के अंदर टपल है, टपल के अंदर भी लिस्ट है, right? So if I check the type of tp2, it will be a list. And if I check just the 0 1 2 3 third element, this is, इसका टाइप चेक करूंगा, this will be a tuple. ठीक है, अब इसी टपल के अंदर, इस टपल के अंदर का मैं थर्ड एलिमेंट चेक करूंगा, अगेन लिस्ट है। सो लिस्ट के अंदर टपल, टपल के अंदर लिस्ट, यू कैन डू एनी कॉम्बिनेशन यू वांट। कैन एनीवन थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर यू विल एक्चुअली यूज टपल? सब कुछ तो सेम है लिस्ट के साथ। कैन एनीवन टेल मी अ यूज केस क्विकली? एक्चुअल वर्ल्ड में क्या यूज होएगा यार टपल का? सब कुछ तो सेम है लिस्ट के साथ, बनाया क्यों है इन्होंने टपल? जल्दी बताओ। लिस्ट में भी हो सकते हैं, अभी तो देखा हमने, लिस्ट के अंदर भी इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन सब आ सकता है। राइट, we just saw, right, that you can have anything in a list and even in a, you know, this particular thing.
which is nothing but your. तो लिस्ट और टपल दोनों में ही सब कुछ आ सकता है, राइट? दिस वी ऑल गेट. सो सी, लिस्ट में भी ऐसे हम लिख सकते हैं 1 2 और यहाँ पे नेम आयुष. ठीक है, टपल में भी ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, both cases I can do. Any other thing that you can think it of? Let me give you an actual use case of it. ठीक है. Have you heard something about grades? Grades तो पता है ना सबको. A plus, B plus. So let's say we have to define grades. One is A, one is A plus, B plus and C. Maybe किसी क्लास में ये grades है. ठीक है. अब एक बात बताओ, एक बार ही grades define हो जाते हैं, are they ever changed at all? If you are admitted to first class, are they ever changed? No. The answer is these will never be changed. This is a grading system, right? Change होगा तो like after a few years or something, right? But generally देखा तो they won't never be changed. So whenever there is something which is never changed, use a tuple. कल को मैंने इसमें आके ये नहीं है ना, मैं एक और ग्रेड डालना चाहता हूँ, अच्छा यार ई भी डाल दो इसमें, एक एफ भी ग्रेड डाल दो, राइट? ऐसा नहीं होता है, राइट? तो जहां पे भी थिंग्स आर विच इज नेवर टू बी चेंज्ड, बेसिकली दिस इज नथिंग बट इम्यूटेबल, यूज टपल. ठीक है, एवरीवन विद मी टिल हियर, राइट? सिंपल ही है कॉन्स्ट्रक्ट, जस्ट क्या बहुत ही सिंपल ही है कॉन्स्ट्रक्ट, कुछ है नहीं. ठीक है, और कोई यूज केस? अच्छा, नाउ you are studying in 12th class. If you have a variable named number of subject, basically not number, I'll have a better thing, which is subjects. 12th class, everyone remember? How many are you from commerce background? And how many from a non-med background or a med background, if there is any from med also? Commerce. Okay. So a lot of you from commerce. You remember we had something like additional subjects and optional subjects, if I remember correctly. I passed 12th in 2010 or 9, I think. It's been quite some time. I think we still have, right? So we have this concept of additional and optional subjects. So if for a student I want to store the subjects he has taken, what will I use? List or a tuple? Considering this fact, you always have an additional and optional option, right? Optional you can add. I think one of them is mandatory and another you can choose. And when you are choosing, you can select up to 2-3 subjects, right? So will you store subjects for that particular person, let's say you, in a list or in a tuple? Faz says list. Does everyone agree with Faz? Akan says tuple.
Okay. Again, listen to this. List in a tuple. Hmm. Let's simplify it. Not list in a tuple. Whether list in a tuple is actually a good option. But what I'll say is, yeah, I mean, that's a good option actually, Ajit. So ideally, to keep it simple, you'll use a list because you can add and remove, right? 11th mein you selected that you will take maths. By the end of 11, you realize you can't take maths. So you remove maths and you add some subject like physical education. Physical education सबको याद है, right? At least non-med वालों को तो सबको याद होता है. I am from a non-med background. I have taken physical education. I have played 2 periods every day, compulsorily, all 11th, 12th. That was the only reason I took physical education. But then I also took economics in my 12th class. Okay, just because I had some interest towards commerce also. So I took, I think, as an additional subject. So I only appeared for economics exam directly in the 12th boards. ठीक है. तो जस्ट टू मतलब सिंप्लीफाई इट, मैंने मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट्स से कुछ लोग मैथ्स ऐड करते हैं 11th में फिर रिमूव कर देते हैं और मैथ्स की जगह कुछ और ऐड कर देते हैं, राइट? सो लिस्ट इज अ वेरी गुड डेटा सेट, बेसिकली टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू यूज इट. ठीक है. एंड जैसे अजित ने पॉइंट किया था, लिस्ट इन अ टपल इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल एंड वेरी थॉटफुल. ओके, व्हाई इज बिकॉज you'll have always have subjects which are fixed. जैसे commerce में I guess one is economics which you have to study, right? One is political science if I remember, accounts. So these are fixed subjects, right? Then you have some a list of subjects that you can choose, which is like maths or physical education, right? And something else, right? So list inside a tuple where the things which are fixed, this is nothing but fix, this to should be there, and you have a place where you can actually add and remove, which is variables list. ठीक है. Everyone understands that. Even if you don't understand this particular one, this is a very thoughtful thing. Okay. uh, Kudos to Ajit to bring it up. Okay. But yeah, simple concept of list everyone understands कि यहाँ पे list will be much more helpful, right? The only reason being because हम add कर रहे हैं delete कर रहे हैं यार, simple. ठीक है. Yes, no, nothing, not idea, or everything is a lie. कुछ तो आंसर दे सकते हैं यार. Okay, practical example. Shall this is the most practical example I could come up with. I mean, since you all have studied 11th, 12th, and most of you for from commerce background where you need, subjects like that. That's why tuple and list. Acha, code wise. So code wise, yeah, we can write code also. So code wise, why I'm restricting from writing code is you all can practice it by yourself, I think. So let's say this is a subject. Okay. So I mean, there's no code like this. So if I have subjects like maths, I'll just write like this: math, science, economics, right? Now, as of now, I have taken physical education. Okay. Now, at some point of time after my 11th class, I decide I want to, I don't want to study physical education. Okay. So my current list of subject becomes this. Tomorrow I say I want to, you know, add another subject which is computer engineering or computer science. I can do that. All this flexibility comes in a list. Okay. However, once I convert this to a tuple, okay, I'll just rename this. Okay. Now
my list of subjects becomes a tuple, right? If I want to append, can I do that? I cannot do that, right? Can I do something for, you know, since this is a tuple, right? Can I do something else? Can I do add? I cannot do add. Can I do remove, pop? Nothing, right? So it will always be like this. It is a rigid option. Okay. So what Ajit suggested was, instead of having this, we have a list, we have a tuple, okay, which has all these subjects which are actually fixed. I mean, math, science, and economics. So I'll change it to commerce subjects, accounts, uh, economics, and political science, I think. यही होते थे. And here in the optional, I can have, let's say अभी मैंने physical maths लिया हुआ है. So this is my this particular list. Okay. Now I have taken accounts, physical, political science, economics. These are my fixed subjects. I can't change them. But then this subject is something which I can change. So what I'll do is, let's say this is my last element. Okay. Now I want to, instead of maths, okay, I'll remove M. Okay. So my new list of subjects it becomes empty. I have to add something here. Okay. And last May, I decided that I'll study physical education in 12th class rather than maths. My new. Okay. Cool. This code works, right? Everyone with me? Why this particular format of writing? ये फिक्स्ड चीजें आ गई, ठीक है, ये मेरी ऑप्शनल चीज आ गई. सिंपल. ठीक है. All these things are what? Fixed. Right? This particular thing is something which is nothing my optional subject. Okay? Great. So tuple ko bhi slicing is same. Start, stop, and step. Okay. So 0 to 3. Okay. 4 to 6. Very similar to whatever we have done. Okay. Also, since it's immutable, so it leads lesser memory. Lesser memory में क्या होएगा? सिंपल ये है कि अगर मैंने एक बारी फिक्स कर दिया, इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स आएंगे. आई कांट ऐड द फोर्थ एलिमेंट, नाइदर कैन आई डिलीट. तो वो हमेशा फिक्स रहा, राइट? इन केस ऑफ अ लिस्ट, यू विल हैव टू डिफाइन इट ऑलवेज. ठीक है. जैसे एक सिंपल बताऊं. ठीक है. सो यू हैव यू नो, लेट्स से कोक की बॉटल आती है, राइट? सो कोक की बॉटल इज लेट्स से फिल टिल टॉप. वो थोड़ा सा स्पेस होता है, लेट्स से इट्स फिल टिल टॉप. ओके. नाउ इट इज फिल टिल टॉप ना. I can't remove anything from it. I always know it will consider always have 500 ml, right? However, if I take my own bottle, ठीक है, और मे बी माई ओन ग्लास, अब मैं उसमें 10 ml डालूं, 20 ml डालूं, या 50 ml डालूं, मुझे ग्लास तो हमेशा पूरा रखना पड़ेगा, राइट? So that it can have up to, let's say I have a glass of 500 ml. Even if I have to drink 10 ml of cold drink, I'll use that 500 ml glass, right? So I'm doing wastage, right? 500 ml के ग्लास में सिर्फ 10 ml वो पी रहा हूँ, right? So that's how it is. ठीक है. सिंस टपल में फिक्स्ड है सब कुछ, तो मेमोरी भी कम चाहिए होती है सेव करने के लिए. ठीक है. तुम्हें पहले से पता है ना यार, ये तीन के तीन ही एलिमेंट्स रहेंगे, तो तुम इतना ही स्पेस दोगे. अब जिसमें तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तीन के 300 बनेंगे या 3000 बनेंगे, राइट? आई कैन ऐड 1000 एलिमेंट्स टू अ लिस्ट ऑल्सो, राइट? सो दैट्स व्हाई इट विल हैव अ ऑलवेज हायर. ओके. And because of that, performance is way better. Okay.
in which we talked about that Python reserves the data temporarily. Okay. Now come to dictionary. Okay. Dictionary is again kind of a, जैसे हमारी normal dictionary है, ठीक है, it's very similar to that. So with a word, you have something, let's say a word is playing, that playing will have some meaning. Okay. So similar, very similar construct we have in Python, which is of our dictionary. Again, a very, very useful, data type in Python. Okay. तो डिक्शनरी में कुछ नहीं होता है, एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, और इसमें हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, एंड दीज आर म्यूटेबल्स और अनऑर्डर्ड, मतलब किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे डिक्शनरी डिफाइन करना है, ठीक है, so let's define a dictionary. So let's say I want to define a dictionary which has roll number, ठीक है, और उस रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग सम पर्सन नेम. So let's say roll number 1 is Ajit. So curly braces लगाई, this is my roll number, this is my value, ठीक है। रोल नंबर 1 का नाम है अजीत, रोल नंबर 2 का नाम है तो 2 कोलन जो भी उसका नाम होगा, तो जस्ट टू अच्छे तरीके से लिखने के लिए मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि सबको दिख जाए. 2 है जैसे लेट्स से साहिल, ठीक है. 3 इज लेट्स से जसकीरत, okay, and 4 is let's say who all is present today, like Akansh. Okay, so we have these set of people. Cool. Now if I have to know roll number 4 कौन है, तो I can just do dt square brackets, right, रोल नंबर कौन सा मैं ढूंढ रहा हूँ, 4, ठीक है. अब मैं देख रहा हूँ रोल नंबर 10 कौन सा है, तो ऑब्वियसली 10 तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एरर आ जाता है, ठीक है. तो जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से कर सकते हैं, देयर इज फंक्शन कॉल्ड गेट, वो भी हम यूज कर सकते हैं. तो dt डॉट गेट और मैं इंडेक्स दे दूंगा तो भी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है. अगर मुझे फाइंड आउट करना है कितने वो थे मेरे पास, रोल नंबर कितने हैं, तो dt डॉट कीज, तो 1 2 3 4 दीज आर द कीज. अच्छा, कितने लोग हैं इनके करस्पॉन्डिंग, तो dt डॉट वैल्यूज, तो की वैल्यूज, तो ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू. अच्छा, अब ये ऑर्डर्ड नहीं होते. ऑर्डर्ड का मतलब अगर मेरे पास 10th रोल नंबर, लेट्स से 5th रोल नंबर था, लेट्स से उसका नाम आयुषी था, तो आई कैन स्टिल सेव लाइक दिस, राइट, आई कैन स्टिल सेव लाइक दिस 5 1 2 4. अब मेरी लिस्ट तो वो है नहीं, तब भी मेरा फोर्थ जो है वो हमेशा फोर्थ ही रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं होएगी इसमें, ठीक है. क्यों? क्योंकि पोजीशन की जगह वो इस नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है. अब ये नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है. कल को मैं एक और डिक्शनरी डिफाइन करूं विच इज नथिंग बट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है. सो लेट्स से माय लास्ट नेम इज कुब्बा, ठीक है. अजीत, अजीत व्हाट्स योर लास्ट नेम, साहिल आई नो माथुर, जैन, ओके, या आई जस्ट सॉ एंड okay, I am just writing now the ones I am able to remember for now. Okay, let's say this is someone, I don't know. Okay, so let's say we have these people. Now we can still create a list. Now instead of numbers मैंने उसको string की keys बना दी. तो अगर मुझे find out करना है whose last name was Kubba, I can just do this. I want to find out whose last name was Singh, I can just do this. अच्छा, can I store सेम की पे मैं दो वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ क्या? अब मैंने लिखा सिंह, जसकीरत भी है, सिंह, लेट्स से अनिल भी है कोई, ओके, आई कैन स्टोर इट, बट व्हाट इफ आई डू दिस, आई ओनली हैव द एलिमेंट विच अकर्स लास्ट, ठीक है. सो अगर मैं इसको प्रिंट भी करूं तो देखो एक सिंह मेरा उड़ चुका है, तो इट कांट कीप डुप्लीकेट कीज.
no duplicate keys are allowed in a dictionary. ठीक है? Cool. Everyone with me till now? ठीक है, डिक्शनरी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा. सी, जब तक ये चीज तुम ट्राई नहीं करोगे ना सारे इधर उधर से, तो कभी कुछ याद नहीं रहेगा. आई थिंक फैज को मैं इंक्लूड करना भूल गया डिक्शनरी में. आई शुड हैव, बिकॉज ही इज द वन हु ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स फर्स्ट. एंड सी, एवरी वन ऑफ यू प्लीज स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, एंड इफ इट हेल्प्स, वी ऑल कैन, व्हाट वी कैन डू इज जस्ट टू गेट अ क्लासरूम फीलिंग, we all can turn our cameras on. We all can see each other from tomorrow. Okay? Take care. So let's do it this way. From tomorrow, we'll all keep our, cameras on. Take care. So make sure कि you are kind of dressed, if not very properly, but dressed at least. Okay? And from tomorrow, everyone will switch on their camera. Take care. I want everyone to interact in the class. Mute, unmute themselves when they have to talk. Whenever I'm asking a question, just unmute yourself, answer the question, and close it out. Okay? Does that work for everyone from tomorrow? Okay? Cool. So, kal se make sure you are dressed. Okay? That's the only thing. Not dressed properly, but wearing something when you are taking the class. And we'll all turn our cameras and interact in a class like we do. See, this pandemic is going to be long enough. ठीक है? I mean, सबको पता है like cases कितने जा रहे हैं. I hope no one is affected in our, circle. Like, I also got COVID way back in January, and I can say it's like one of the worst experience. Okay, but so try to avoid it, and this pandemic will continue for some more time. So online classes will be a thing. So it's better we all adjust to it. Okay, I mean, obviously things improve तो अच्छा ही है, ठीक है, but considering the situations. Okay, Samraj, you're COVID positive. How are you doing? I mean, is it acute or is it what, asymptomatic? Samraj, is it acute or asymptomatic? Like, what is it? Mild symptoms. Take rest. Initially, they will be mild. Mildly. Yeah, initially they will be mild symptoms. Uh, yes. I'm home quarantined right now. Okay, okay. Take rest, take rest. Yes. Okay. So yeah, let's all of us try to, get accustomed to this online way. Okay. And yeah, that's bit of it. Okay, so we have keys and we have values in a dictionary. ठीक है, key है, value है, उसके corresponding. ठीक है, if I have to add an element to a dictionary, okay, what I can do simply is, so let's say I didn't add Faz. Faz, what's your last name? Faz Khan. So let's say I add a new person to this particular dictionary. So all I can do is dt. What was my key name? Key name, since I've kept last names. Okay. And then this is your first name. Okay. So now if I print this list, I should have this particular element. Okay. And I can then refer it by. Okay. Cool. So that's how it will work like. Okay. Now, similarly, you can add an element. You can also remove an element from a dictionary. For removing, we use del operator. Okay, del and whatever value you want to remove. Okay, so इसमें क्या होगा? Everything in the dictionary is referred by a key only.
Okay, so DT, let's say I want to remove me from the list. Okay, cool. Okay, dictionary word count examples. ठीक है. अच्छा, this is very simple now and very simple also and very useful also. ठीक है. तो whenever you are doing any text analysis nothing. जैसे तुम्हें एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. I want to count how many times is a word occurring in that particular string. Okay, fine. अच्छा, कोई एप्पल के इवेंट्स को फॉलो करता है? तो दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल. एप्पल के कोई इवेंट्स को फॉलो करता है? जब लाइक एप्पल आईफोन लॉन्च करता है तो एक इवेंट करता है, राइट, ईयरली. एंड जब मैकबुक्स लॉन्च करता है तो एक इवेंट करता है इन अप्रैल, और आई थिंक आईफोन्स का अराउंड सितंबर होता है. अच्छा, so whosoever follows, or if not Apple, why I am giving Apple example, I'll come to it. So Apple uses something, a word called awesome so many times, right? Ki, not awesome, actually the best word. So many times that if I have to just take, पूरे event की अगर मैं simple transcripts ले लूं, और I just try to find कौन से words mostly use करे गए थे speech में. So what you will find is it is best in speakers, it is best antenna, best camera, best in class camera, or awesome camera. So you'll find best and awesome being used thousand of times. Like in every minute they repeat the word called best or awesome. So if you have to find the most frequent word, okay, then you will get to know using uh, nothing but a dictionary. Okay. So all I can do is, let's say I have a sentence. Okay. This is a cat. I live in a cat home. I eat cat food. I sleep like a cat. Okay, I have this sentence. Now, all you need to do is find how many times a word occurs in this particular sentence. अब by dictionaries, अब मुझे पता है डिक्शनरी क्या होता है, की होता है, वैल्यू होता है. तो मुझे भी तो ऐसा ही कुछ चाहिए ना. मुझे चाहिए दिस जो है ये 5 बार आया, लेट्स से एक बार आया. कैट जो है मान लो 5 बार आया. मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, ठीक है. जब मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए तो व्हाट आई विल यूज इज समथिंग कॉल्ड डिक्शनरी. तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन सेंट वन डॉट स्प्लिट, सबसे पहले तो मैं वर्ड्स प्रिंट करता हूँ. अच्छा, एक चीज है, अभी मेरे पास ये फुल स्टॉप्स भी हैं, ठीक है. तो आई यूज समथिंग कॉल्ड रेजेक्स. तो रेजेक्स क्या होता है? रेजेक्स से क्या होता है, हम ये स्ट्रिंग्स को एडिट कर सकते हैं. तो आर ई डॉट यू नो रिप्लेस, डॉट को मुझे रिप्लेस करना है सिंपल स्पेस से मेरे सेंटेंस में, ठीक है. एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड. ओके, फाइंड ऑल. सॉरी, ठीक है. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल आई नीड टू डू इज टू फाइंड अ वर्ड, okay, and replace it with that particular thing. Fine. So let's say I have this and this. Okay. So I want to remove the dot from everything that is occurring in a string. So because मेरे पास क्या हो रहा है, कैट डॉट अलग आ रहा है, कैट अलग आ रहा है, ठीक है. तो मैं एक सिंपल regex is something, कुछ नहीं, simply तुम you try to format the data so that you can clean the data, you can do many things with it, but for now, ठीक है, just to keep things simple, what I've done is just to remove this, just assume कि मुझे डॉट रिमूव करना है इसके अंदर, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है. तो उसके लिए एक सब आर ई डॉट सब होता है, हम
we import something called RE. RE is nothing but a Python file. वो Python फाइल में एक फंक्शन है जिसका नाम है सब. सब क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है कि किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है और दे देता है. तो मैंने फुल स्टॉप को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया. तो आई गॉट अ न्यू सेंटेंस एंड नाउ इफ आई डू आई गेट प्रॉपरली. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाऊंगा. ठीक है. यहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रहा हो तो बता देना मुझे. ठीक है. इसका नाम रखूंगा मैं काउंट्स. ठीक है. अब काउंट्स में मैं क्या करूंगा, फॉर एवरी टाइम. ओके. एंड आई कैन गो बैक टू द कोड ऑल्सो. सो यहाँ पे हमने काउंट्स डिक्शनरी बनाया. जब भी वो वर्ड नहीं है तो उसको मैं डाल दूंगा. जैसे ही वो वर्ड है, आई बम्प द काउंट. ठीक है. ऑल विद मी टिल हियर. करेक्ट. सो मैंने क्या चेक किया यहाँ पे, इफ आई इज नॉट इन माई डिक्शनरी, देन what I do is काउंट्स डिक्शनरी में आई क्या है, आई इज नथिंग बट दैट वर्ड. उस वर्ड को डाल दो. ओके. एल्स अगर वो होता ही तो क्या करते हैं, सिंपली उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1. सो इफ आई हैव टू प्रिंट, सो यहाँ से मैं बस आ गया. अच्छा, कैट 4 टाइम्स आ रहा है तो ही इज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज यूजिंग ए कैट एंड आई 3-4 टाइम्स. बाकी सारे वर्ड देखो सिर्फ एक एक बार यूज हुआ. ठीक है. सिंपल, सिंपल एंड वेरी यूजफुल कॉन्स्ट्रक्ट. ठीक है. ओके. अच्छा, now that's telling that in case you don't initialize it, you will get an error. Why? Because let's say अगर मैं ये नहीं डालता कोड में, ठीक है, and I am just initial adding a value, this will throw an error. Why? Because a new word is not there, right? This मैंने डाला but वो पहले से होना चाहिए ना डिक्शनरी में. सीधा तो मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, right? That's what they are trying to explain. Okay, cool. Now, in order to, you know, अवॉइड दैट पर्टिकुलर एरर जो भी हमने देखा कि कुछ इनिशियलाइज ही नहीं है. इनिशियलाइज मतलब वो की एग्जिस्ट नहीं करती थी तो हम डाल देते थे. ठीक है. तो we have another type of dictionary which is called default dict. Okay, even if you don't use default dict, don't worry. ठीक है. It's anyhow not used that commonly. ठीक है. But you should just know about it. ठीक है. अब डिफॉल्ट डिक्ट में क्या होता है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिक्ट एंड डिफॉल्ट डिक्ट इज दैट you can initialize it with some value. Okay. अगर कुछ भी वैल्यू उसको मिलती है तो सिंपल क्या करता है, उसको जीरो बना देता है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई दिस आउट. सेम प्रोग्राम ट्राई करेंगे. ठीक है. बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ डिक्ट, दिस टाइम विल मेक इट अ डिफॉल्ट डिक्ट. ठीक है. सो सेम कोड यूज करते हैं. ठीक है. इंस्टेड ऑफ दिस वी मेक अ डेफ काउंट. ओके. एंड ये सब हटा देंगे हम. एंड व्हेन आई एम ट्राइंग इट आउट ना, ट्राई करो तुम लोग भी साथ साथ नोटबुक खोल के ट्राई कर लो. ठीक है. इन केस यू गेट टाइम. ठीक है. सो एट टाइम्स ये टैब काम करता है बट एट टाइम्स नहीं भी करता है. अच्छा, दिस आई डिडंट राइट. ऑलवेज यूज टैब. ओके, whenever you are writing.
So like if you write def and press tab 2-3 times, you will get the actual thing which needs to be filled up. Okay, so अब इस केस में मैं डिफॉल्ट डिक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट मैं जो डिक्ट बना रहा हूँ वो मैं इंटीजर की बना रहा हूँ, सो दैट वैल्यूज जो है वो मेरी उससे इनिशियलाइज है। तो ऑल आई कुड सी वाज I getting the same thing again, right? But this time I didn't had to check if this is not in this and all that stupidity I didn't had to do. Okay. What if I create this of str? It will again be an error because I can't add values like this, right? But I could do one thing out here. Can anyone understand this particular code, what I did? So what I did is instead of adding, I did concatenation. So all this 1, 2, 3, 4 are representing nothing, but that cat is being represented 4 times. This is 3 times, right? So I can create a default dict of string, integer, anything. It's just that when I create a string, तो वो क्या करेगा, सिंपली एक ब्लैंक वैल्यू बना देगा जब भी कोई नया आएगा वेरिएबल, तो सिंपली ऐसे बना के रख देगा, ठीक है। इंट होएगा तो 0 डाल देगा, स्ट्रिंग होगा तो ये डाल देगा। अच्छा, बूल का बना सकता हूँ क्या? लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। बूल भी बना सकते हैं। बूल में क्या होएगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो जाएगा और ये सिंपली हमारे एड ऑन होते जाएंगे। नथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव फॉर योर, ठीक है, आई मीन सिंपली फॉर योर numbers. तो bool will work in the very similar. Can we sort this? Yes, we can sort this, but there is no direct function to sort, and we'll cover it up अभी आएगा, ठीक है। So you can sort it by keys, you can sort it by values, and that's like the beauty of it. Okay, so generally what you will do is you will create a new dict. Acha, how can I reverse key and a value? So I had this dictionary. Okay, so let me use this. So if I have to reverse the elements, what I'll do is simple for ij in default. This is no dot items. Okay, now what I've done is I've just reversed the list, and obviously once I reverse the list, तो वन वाला कौन सा बचेगा, जो लास्ट में आया था, तो वन लाइक वाला आएगा क्योंकि सारे ही वन थे। अगेन थ्री का कौन सा बचेगा, ए आई में से जो लास्ट में आया था। कैट सिंस एक ही बार आया तो ये, क्योंकि अब मैंने उल्टा कर दिया ना, और की तो यूनिक ही रहेगी हमेशा, ठीक है। कूल, दिस इज रिवर्सिंग, ठीक है। सिमिलरली विल हैव सॉर्टिंग एंड एवरीथिंग इन दीज फंक्शंस इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, ठीक है। डिक्शनरी के साथ लूप करना है तो यूज समथिंग कॉल्ड डॉट आइटम्स व्हिच आई जस्ट शोड यू। ओके, आइटम से क्या होएगा, डायरेक्टली की वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ कीज देखनी है, आई जस्ट वांट टू सी ओनली द कीज, तो फॉर आई इन डॉट कीज प्रिंट आई, ठीक है। सिंपल वैल्यूज देखनी है तो सिंपल वैल्यूज आ गई, ठीक है। सो हम कीज दे सकते हैं, वैल्यूज देख सकते हैं, राइट। हमने पूरी डिक्शनरी को एक स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, वी कैन डू ऑल दो स्टफ, राइट। अगेन इसमें भी सेम चीज है, क्लियर करना है तो पूरा डिलीट हो जाएगा, कॉपी करना है तो ये हो जाए, ओवरराइट करना है तो सिंपली की दे के वैल्यू चेंज कर दो। तो लेट्स से इस डिफॉल्ट डिक्ट डेफ काउंट में मैं दिस का काउंट बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये है, लेट्स से लाइक जो है, अब मुझे लाइक को की वैल्यू को करना है 100, सिंपली 100 करना है। ओके, सो सिंपल असाइनमेंट करना है एंड, ठीक है। आई वांट टू डिलीट लाइक,
तो लाइक हट गया। ठीक है, अगेन कॉपी एंड ऑल और दोज शैलो कॉपी एंड रेफरेंस कॉपी वी ऑल अंडरस्टैंड राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 बनाया, अगर मैं सिंपल ऐसे देता हूँ और डेफ काउंट 2 में मैं एक नया वैल्यू ऐड करता हूँ, लेट्स से मार्टिकस, इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 15। तो मेरा डेफ काउंट 2 में तो ये आ ही जाएगा, डेफ काउंट 1 में भी आ जाएगा, सेम थिंग्स। ठीक है, ये बहुत सारी कंफ्यूजिंग हो सकती है, टप्पल डिक्शनरी लिस्ट क्या है, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आ जाएगा। ठीक है, आइटम से की वैल्यू पेयर्स आ जाते हैं, वैल्यूज और कीज से सिर्फ कीज और वैल्यूज आती हैं। ठीक है, कूल। गेट फंक्शन हमने अभी देखा था। ठीक है, तो गेट से हो जाए। अच्छा, गेट और जो सिंपली हम दो तरीके से कर सकते हैं राइट। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ईट का कितना काउंट था, तो आई कैन यूज दिस, आई कैन ऑल्सो यूज गेट फंक्शन एंड पास दिस की राइट। द ओनली थिंग इज, जब मुझे कोई एक वर्ड फाइंड आउट करना है, लेट्स से वो नहीं था, तो ईटिंग, तो इस केस में ये फॉल्स देता है, इस केस में भी फॉल्स देता है। ठीक है, तो बस ये वाले सारे जो पॉइंटर्स हैं ये तुम्हें याद रखने। ठीक है, और ये कई बार एरर भी देता है, तो इफ आई डू समथिंग लाइक, अच्छा ये तो डिफॉल्ट डिक्ट है, डिफॉल्ट डिक्ट एरर नहीं देता। ठीक है, बट अगर मैं दूसरा डिक्ट बनाता हूँ विच इज वॉज माई काउंट्स, तो काउंट्स के अंदर मैं डाल देता हूँ डिक्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब काउंट्स को मैं अगर ये वाला वर्ड कर रहा हूँ तो आ जाएगा, बट जैसे ही मैं कोई वर्ड करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, सेकेंड, आई थिंक आई हैव चेंज द डेटा टाइप। तो वी शुड आइडली गेट समथिंग लाइक ये ये देख रहे हो, ये की एरर आ जाता है जब हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते। ठीक है, दिस इज द एरर आई वांटेड टू शोकेस टू यू। ठीक है, कूल। किसी में नन दे रहा है, किसी में फॉल्स दे रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फाइन। नाउ डिक्शनरी ऑपरेशंस। ठीक है, वी कैन ऑलवेज सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यू से क्या होएगा, ठीक है, किसी को अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है काइंड ऑफ दे देता है। ठीक है, गॉट इट। अब हमने देखा था जब मैंने असाइन की थी वैल्यूज, तो मैंने क्या किया था, आइटम परचेज ब्रैकेट में वॉलेट्स करके इज इक्वल टू 4.5 कर दिया। सिमिलरली यू कैन डू इट इन अदर वेज ऑल्सो। ओके, क्विक क्वेश्चन टिल नाउ, कुछ भी डाउट है? थोड़ा बोरिंग हो रहा है आई नो, बहुत सारी चीजें जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में ये जितने भी चीजें हैं ये हमें कोड करके देखनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, टपल से डिक्शनरी बनाई है और जितने भी टपल्स थे सारी की सारी को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 8। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने टपल से पहले डिक्शनरी बनाई, अब उन सारी डिक्शनरी को एक वैल्यू दे दी 8 विच इज डॉट फ्रॉम कीज ऑपरेटर। ठीक है, नाउ अभी तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, आकांक्ष रिवर्स, सॉरी सॉर्ट वे विल कवर अभी। ठीक है, जस्ट थोड़े से ऑपरेशंस और उसके बाद सॉर्ट पे जाएंगे। इसमें सॉर्ट और सॉर्टेड ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं होता, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, नाउ एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन टिल नाउ?
अभी जो ऑपरेशंस कर रहे हैं बस उसी पे फोकस करो सो दैट वी नो। ये सारे अभी हमने कर लिए थे, ये था, मैंने इसकी वैल्यू को 8 से 7 कर दिया। ठीक है, किसी वैल्यू को डिलीट करना, डिलीट कर दिया। ठीक है, डुप्लीकेट की में अगर है वो हमेशा लास्ट वैल्यू आएगी, विच वी जस्ट सॉ। ओके, दो लिस्ट को कंबाइन करके डिक्शनरी बनाना है तो यूज समथिंग कॉल अ जिप ऑपरेटर। तो जिप लिया, अब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली बताऊं तो यू हैव एक्स, दिस इज 1 2 3, यू हैव वाई, लेट्स से दिस इज नेम, आयुष, साहिल, अमित। Okay, so in order to have create a dictionary for this, I'll zip those elements and then create a dictionary. तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कर देता, ठीक है, तो देखो फोर्थ एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं था फाइव वाली लिस्ट में, तो उसने लिया ही नहीं। ठीक है, और लेट्स से अब मेरा यहाँ पे ऐसा था और यहाँ पे मेरे पास एक और नाम है। ठीक है, सो यू कैन डिफाइन डिक्शनरी इन मल्टीपल वेज। इफ आई एम डिफाइनिंग ऑल द वैल्यूज, तब मैं ऐसे ही डिफाइन करूंगा, राइट? बट लेट्स से यू हैव अ लिस्ट, ओके, यू हैव गिवन टू लिस्ट, तुम्हें इसका डिक्शनरी बनाना है, तो ये थोड़ा ना तुम एक एक एलिमेंट बार बार ऐसे लिखते रहोगे। तो दोनों लिस्ट को कंबाइन करो, कंबाइन के लिए ये फंक्शन होता है जिप। जिप क्या करता है, एक एक एलिमेंट को स्टिच कर देता है, तो वन पे टू, टू पे ये, थ्री पे ये, और देन आई यूज समथिंग कॉल्ड डिक्ट। ठीक है, वो पूरा डिक्शनरी ऑटोमेटिकली बना के दे देगा मुझे। ठीक है, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट, सी एट द एंड जब उसने क्रिएट किया तो यही ऑपरेटर आया, राइट? And if I want, I could have created it by myself by writing like this. ठीक है, so there are like n number of ways to access and create dictionaries. Just always remember that. ठीक है, okay Akansh, cool. Is it fine or you have any doubts? No. Okay, so see, there are multiple ways to create a dictionary. ठीक है, you can create dictionary from a tuple, you can create dictionary from a list, you can create dictionary from actually anything. ओके, सो अगर मुझे एक डिक्शनरी बनाना है तो वन वे आई कैन डू इज बाय राइटिंग दिस, कि वन इज आयुष, टू इज अमित, ठीक है, थ्री इज ठीक है साहिल में भी। दिस इज वन वे। नाउ लेट्स से इन एक्चुअल सिचुएशन तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा, तुम्हारे पास एक नेम्स की लिस्ट है, ओके, एंड यू हैव देयर नंबर्स, लेट्स से दिस केस इज 1 2 3। ठीक है, अब क्या मैं एक एक करके ऐसे लिखता जाऊंगा क्या, मुझे डिक्शनरी बनानी है अगर इनकी तो? नहीं, बिकॉज आई कैन हैव सो मेनी नेम्स, सो मेनी नंबर्स। सो व्हाट आई यूज इज, आई यूज अ जिप ऑपरेटर। जिप क्या करता है, दो लिस्ट को कंबाइन कर देता है। ठीक है, अब जैसे ये कंबाइन हो चुकी है, इसको मैं फिर एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूंगा बाय यूजिंग डिक्ट ऑपरेटर। वो इसको ऐसे कर देता है। ठीक है, और मेरे पास सेम डिक्शनरी आ जाएगी। ठीक है, अभी ये जिप मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। मुझे जिप से लिस्ट बनानी है तो देखो मैंने लिस्ट बना दी, अभी डिक्शनरी नहीं बनी। ये देखो ये लिस्ट बन गई। आकांक्ष, आर यू क्लियर नाउ? कूल, ओके, जस्ट टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है उसमें? जिप फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं अगर ए बी सी, और दूसरी लिस्ट है इसमें 1 2 3 4। पहले तो देखो जिप फंक्शन क्या करता है। तो जिप फंक्शन कुछ नहीं है, इन दोनों को कंबाइन कर लेगा।
इसको एक पेयर बना देगा, इसको एक पेयर बना देगा, इसको एक पेयर, जो रह गया वो रह गया, इसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है। अब जैसे ये पेयर बन गए तो मेरे पास एक पेयर है A1, दूसरा पेयर है B2, तीसरा है C3। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ विच इज डिक्ट, जो इन पेयर्स को कन्वर्ट कर देगा डिक्शनरी में। तो क्या डिक्शनरी बना देगा वो, A का वैल्यू है 1, ठीक है, B का वैल्यू है 2, ऐसे वो डिक्शनरी ऑटोमेटिक बना देता है। दूसरा, अगर हम वही पेयरिंग जो भी हमने की थी कि A1 B2 C3, इसकी पेयरिंग को एक लिस्ट के फंक्शन में डाल देता हूँ, तो वो लिस्ट बना देता है ऐसे, जिसमें कुछ नहीं है, पेयर्स दिखा देगा, देखो ये आपके पेयर्स हैं, क्योंकि मेरे मेमोरी में तो यही स्टोर हुए हैं पेयर्स, राइट, जो हमें यहाँ पे दिख ही रहा था। ठीक है। Cool. Let's move on. Okay. A tuple is immutable. However, if wish, however, टपल में अगर लिस्ट और डिक्शनरी है तो उसको चेंज कर सकते हैं। वो हमने देखा ही था जब हमने वो सब्जेक्ट्स वाला किया था, राइट। ठीक है। कूल। नाउ लेट्स कम टू दोस एडवांस क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ऐड values in a dict in same key? So Sahil, once you add a value for the same key, the value will be overwritten. Okay, right? जैसे अभी मेरे पास ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, लेट्स से इस वाले को मैं डाल देता हूँ, NAM नाम दिया हुआ है इसे मैंने। तो NAM में आयुष का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो कल को मैं आयुष का वैल्यू अगर यहाँ पे कहता हूँ नहीं 100 डाल दे, तो ये मेरे की हमेशा यूनिक रहेगी, अब 1 वाली वैल्यू उड़ जाएगी। ठीक है, इट वोंट बी देयर ऑलवेज। ओके, बट इफ वी यूज, उल्टा कर रहे हो ना, तो तुम कर पाओगे, देन यू कैन डू। तो अब तुमने 1 = ज्वाइन कर दिया, तो कर लो। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें भी, स्ट्रिंग भी हो सकती है की, इंटीजर भी हो सकती है की। और if it's the same then it's over. Yes, if it's the same it will always override. Okay, now I want all of you to try out sorted function on a dictionary. ठीक है, so firstly create a dictionary, ठीक है। उसके अंदर I want two things, that dictionary is a key value pair, ठीक है। की में तुम्हारा रोल नंबर है और वैल्यू में तुम्हारे मार्क्स हैं, दोनों इंटीजर है, ठीक है। So you will have roll number, let's say roll number 1 got 100 marks, ठीक है, every mark should be out of 100. roll number 10 got 20 marks, तो ऐसे 1 to 5 roll number, ठीक है। all you need to do is sort the list, sort the dictionary using sorted function. One thing I want, ठीक है, firstly sorted by sorted function and then tell me the result। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, ठीक है। 10 रोल नंबर के आए थे 100 मार्क्स, ठीक है। 20th रोल नंबर के आए थे 10 मार्क्स, 30th रोल नंबर के आए थे 50 मार्क्स, ठीक है। 1 रोल नंबर के आए थे 90 मार्क्स, और 3 के आए थे 50 मार्क्स, 50, हाँ लेट्स कीप इट 50, ठीक है। सो दिस इज योर डिक्शनरी मार्क्स रोल। ओके, सो आई एम पेस्टिंग इट, ठीक है।
Let's try reversing this particular dictionary. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल सॉर्टेड फंक्शन यूज करना है, नॉट रिवर्स. ठीक है, रिवर्स हम पहले देख चुके हैं. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड मी. ओके, use sorted function and then try to sort the list quickly. जल्दी करो. What do you see when you sort a dictionary by value? Sorry, by just using sorted function. Quickly यार, जल्दी जल्दी बताओ. Direct object है ना, sort नहीं, sorted. आकांश, you have to use sorted. No, no, sorted and pass a dictionary, you won't get an error. Like, try doing it again, you won't get actually. Sorted तो चलेगा. अरे एट्रीब्यूट नहीं है ना साहिल, इट्स अ फंक्शन, सॉर्टेड एंड देन ब्रैकेट में पास अ फंक्शन, पास द डिक्शनरी. ट्राई इट वंस, ट्राई इट. Okay, see, we add this dictionary. Okay, so let me try write sorted function. What I'm getting, I can use sorted. My actual dictionary was 10, 100, 20, 10, right? I had roll number and marks. But once I did just sorted, okay, all I could find was just my keys being sorted in a particular order. Okay, so one way to do things in a fashion is like this. So what I'll do is for I in this, okay, and I create a dictionary out where what I do is I and marks roll I for I. Can you see I have sorted the dictionary by value just by using this particular function?
कैन यू गाइस सी ऑन माई स्क्रीन? राइट, सॉर्टेड चल रहा है यार, ठीक है। सॉर्टेड और डॉट सॉर्ट इज डिफरेंट, सॉर्टेड इज डिफरेंट, या ठीक है। So one way to sort is simple. What I have done out here is just see, why I write in front of you is because if you just read this code, it's difficult to understand, right? So why I write is because मैं सबसे पहले एक बात लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना था, मुझे पता था sorted क्या करता है। Sorted marks roll, ठीक है। What it does is it gives me sort by keys, not by values, by keys. Okay. Now आई नो, अगर मेरे पास ये है, अगर मैं ऐसे कुछ करता हूँ विच इज लाइक गिवन अ की, आई फाउंड द वैल्यू, जैसे गिवन टू 20, आई नो द वैल्यू, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक एलिमेंट्स से चलता हूँ इसमें, ठीक है। तो इफ आई जस्ट डू दिस, तो मेरे पास 1 3 ऐसे आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चाहिए, तो क्या करना है मुझे, बस मार्क्स रोल के अंदर ये पर्टिकुलर की पास कर देनी है, तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब इन सब की मुझे, जैसे मैंने प्रिंट करवाया, इनका डिक्शनरी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पार्ट को लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे डालता हूँ, ये पूरा पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ, और मेरा डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहली चीज करली ब्रेसेस होती है, तो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस डाल दी, और क्या होता है, की और वैल्यू होता है, तो मैंने की और उसकी वैल्यू डाल दी, बट की जो है मेरी सॉर्टेड वे में पिक हो रही है, बस ये फर्क है। एंड मेरे पास आ गए, ठीक है। Yeah. Yeah, I will do the sorting by marks also. Don't worry. But just understand this particular thing first. Okay. Acha, given a value, can you find key? How can we find? Quickly. You have a value, find its key. So, if you have to find a value from key, how can you do that? Simple. Kanch, please tell. I think you only responded. Quick answer, answer, answer. Okay. वैल्यू दी हुई है 100, तुम्हें बतानी है की क्या है।
ठीक है, जस्ट अ सिंपल थिंग. ओके, सिंपल है वो. ठीक है, कुछ नहीं करना है उसके अंदर. अच्छा, so I can create a function. What it does is, given a dictionary, I'll say find by value. So given a dictionary dt, I can given a value, it will return me a key. वो क्या करेगा? For I in dt dot items, and here I can do both the search इकट्ठे. A key value in dt dot items. If my value, let's say this is, I'll change the name because I can't have same name. If val is equal to value, return key. Okay, all you are doing is this. Now if I change the same function, okay, I'll just firstly show how I can actually call. So let me call marks roll, and I want to find the value 50. Okay, so I can get the key back, which is nothing but 30. Simple find by value function. Okay, now I'll use the same function to sort the dictionary, okay, by nothing but values. So what I do is, instead of this, I do something like this, okay, and I'll use same function, okay, just instead of finding by keys, I'll find by values out there. Okay, so I have, okay, sorry, it got zoomed out, my bad. Dot values. Okay, now it is sorted by values. Okay, and when I'm finding it, okay, since I is a value, so this will come here. Okay, on the left hand side, what I'm doing is finding by value. Okay, I'm giving it the value I and then doing it. So have I sorted by marks? So first marks is 10, then 50 marks, then 90 marks, then 100 marks. Everyone with me till here or not? Just quickly बताओ. Yes, no. ठीक है. ये सब तुम्हें ट्राई करने हैं. आइडली ये सब मैंने नहीं करने था. ठीक है. I to do it every day anyhow, right? I'm not getting any benefit out of it. You guys have to try it out. So there is a missing value of keyword 3. Okay. Can anyone tell me why? Then I'll tell you the reason. So, okay, let's see it out here, what he's trying to say. So marks roll, we have 10, 100, 20, 30, 50. Now 30 is corresponding to a value named 50. And again, we have a value 50, which is corresponding to 3. Now do you get why there is an issue in this? Right? So whenever I am having similar values, it will return me the first keys it is encountering. Right? I'm not checking कि कौन कौन सी keys जा चुकी हैं. मैं तो simple ये देख रहा हूँ.
right? So in order to avoid all this hustle, okay, of fine tuning it, so we use something called lambda functions, which make things very easy. Okay. So what we do out here is, and this will actually take care of those repeating things. Okay. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी सॉर्ट किया था सेम सॉर्टेड यूज किया, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉर्टिंग बाय कीज और बाय वैल्यूज, ओके, आई टेक बोथ कीज एंड वैल्यूज बोथ, ठीक है, एंड इन द सॉर्टेड फंक्शन आई प्रोवाइड कि मुझे किससे एग्जैक्टली सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आइटम जीरो मीन्स आउट हेयर कि आई हैव टू सॉर्ट फ्रॉम की, item 1 means I want to sort it via value. Okay. So if I do by 1, my problem of 350 is getting there. If I don't do, I'll still get. Akansh, very good job in pointing it out. Okay. That's the reason this particular thing is written like this. Okay. And you can tweak this function to actually add 3 also. Again, take care. All you need to do is maintain a list, okay, of all the keys I've added. So if I just do this, I initialize a keys variable. Okay. What I do is if this is true and key is not key, not is, okay, not in keys, then what I'll do is keys dot append key. Okay. Now if I'm doing 50, okay, since it's adding the value one by one, so and let me call for this. Now I should be able to get both the 3 and the 50. Okay. So you can always have a workaround in this particular thing, but this is a much better optimized way. Okay. And then we have another way which is called order dict, which I'll tell now. These two things are not there in your notebooks or in your what do you say, presentations, or neither in my notebooks. Okay, so try to take a screenshot of it, okay, and save it. Although I'll share this notebook, what I'll do is for every class, whatever rough things we try, I'll share this notebook. Yeah, so I'll be covering lambda function in detail, okay, in tomorrow's class, don't worry. But for now, what you have to understand is, okay, this particular value which I'm trying to give. Okay. So lambda is kind of a ghost function. I'll go in the full definition again about lambda. All I am doing out here is, just to make you understand, I'm sorting mark rules. Okay. I don't want to sort it just by, keys or values. I want to take both. So to take both, I do items. Okay. Now inside items, I define whether I want to use the left side of the item or the right side of the item. Okay. So for that, I use item 0 or item 1. Okay. This can be any name. This can be Ayush also. Okay. ये कुछ भी नाम हो सकता है. Don't think this is the items और है. ठीक है. इसका मतलब क्या है? मैं ये पूरा का पूरा आइटम दे रहा हूँ. ठीक है. आइटम में क्या आता है? अच्छा, इसको थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करते हैं so that you all understand how it's working. आइटम्स में ये देखो ये लिस्ट आती है, ये देखो ऐसी. मैं इसको रुको स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ. सो आइटम्स क्या करता है? सिंपल, जो अभी हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे उस डिक्शनरी को एज ए लिस्ट बनाया था. ठीक है. उस लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं. ठीक है. जैसे इसके अंदर आया था 10 रोल नंबर के 100 मार्क्स थे, 20 रोल नंबर के लेट्स से 10 मार्क्स थे, जो भी थे. ठीक है. तो जैसे ही मैं उस लैम्डा वाले फंक्शन में क्या बोलता हूँ,
मैंने क्या बोला था कि जब मैं सॉर्ट कर रहा हूँ तो आई वांट टू सॉर्ट इट इन अ कस्टम वे। तो उसके लिए मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ अपना। तो उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आई राइट लेमडा। ठीक है। और वो फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे कोई भी एक्स वैल्यू लेता है एंड इट रिटर्न्स आइदर जीरो और आइदर वन। ठीक है। जीरो का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यूज। ठीक है। जीरो का मतलब है ये वाली वैल्यूज। ठीक है। वन का मतलब है हमारी ये वाली वैल्यूज। ठीक है। तो जीरो इज नथिंग बट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। और वन के लिए ये वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ रही। ठीक है। एवरीवन गॉट दैट? ठीक है। लेमडा फॉर नाउ जस्ट एज्यूम इज अ वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। ठीक है। जैसे हम फंक्शन में क्या लिखते हैं, डेफ करते हैं ना। तो ऐसे ही एक तरह के फंक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं हम लेमडा फंक्शंस। ओके। ये हमारे ना, ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये कहीं पे सेव नहीं होते। ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है, मतलब मेमोरी नहीं लेते। ठीक है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू फॉर नाउ। ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, एक पूरा फंक्शन बनाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे बनाता डी एफ, लेट्स से फंक्शन का नाम मैंने रख दिया ओके। इट टेक्स इन वन आइटम एंड रिटर्न्स आइटम का जीरो। तो ओके, यहाँ पे फिर मुझे एक और वैल्यू करके पास करना पड़ता, विच यू नो इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फिर मुझे यहाँ पे एक एक वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर हसल, वो यूज लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, इसी के अंदर ही, इसी स्कोप में ही डिफाइन हो जाते हैं। तो अभी मैं सेम चीज कर रहा हूँ, आयुष एज अ इनपुट एंड दिस। तो दीज टू फंक्शंस आर एक्चुअली सेम। ओके। इट्स जस्ट दैट writing these functions is an easy way. Okay. Now the homework for you will be to make this function work here. ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, बस कॉल करना है और एक छोटी सी वैल्यू देनी है। उस वैल्यू को करने के लिए तुम्हें ये रीड करना पड़ेगा, बस। ठीक है। गॉट इट? दैट्स द ओनली डिफरेंस। ट्राई इट आउट। ठीक है। सेम यहाँ पे की में ओके चला जाएगा। ठीक है। बट ये जो तुम्हें है, ये रीड करके एक एक वैल्यूज ओके में पास करनी पड़ेगी। तो तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या आता है? देखो, जस्ट हमने ये देखा था। हमें क्या करना है, इसका जो है ये पहली बार में हमें जीरो पास करना है। ठीक है। ओके सॉरी। हाँ, ये डिक्ट आइटम्स है। ठीक है। इसका ये वाला एलिमेंट एक बार पास करना है, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। गूगल ड्राइव लिंक अगेन? एक सेकेंड। Let me do this. I'll drop a mail to all of you. Okay. So I'll upload it here only in this particular folder. So in this particular class or folder, I'll push this particular notebook. Okay. That works for all of you, right?
बट ये रफ ही है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी कमेंट्स इन दिस नोटबुक, सो बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। ओके, लेट्स रैप अप few things which are left out. ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल वे में ब्रैकेट्स और एक्सप्रेशन यूज करके वी डू दिस, ठीक है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन मल्टीपल एग्जांपल फॉर दिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फॉर आई इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, आई वांट टू मल्टीप्लाई द वैल्यू, ठीक है। then I can do it in this way, and on the right hand side I can have a condition, ठीक है। So try this code also, ठीक है। I'm leaving it as it is. This is also like a very simple way to do sorting. Okay. Okay. So this is one. Now list comprehensions में क्या है, ठीक है। So you have a value, and let's say you have a list of 1 2 3 4 5 6 7 8 x है ये सारा, ठीक है। All I need to do is for I want to multiply each value by 2 for all the elements in x. I can simply do like this. Now I want to multiply the value of 2 for all those elements which are divisible by 2. तो where x% 2 is equal to 0. तो क्या होगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज रह जाएंगी हमारी, ठीक है। ये हो जाएगा i, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज आई नहीं हमारी, क्योंकि हमने पास कर दिया था, ठीक है। गॉट इट। और या जिनका रिमाइंडर 1 है, तो उस केस में 1 3 ये वाली वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। Let's say I don't want to multiply, I just want to check conditions. I want to just filter a list. Okay. I just want to multiply everything. Everything raised to power of 3. I can do that. Fine. Quick. So that's how your list comprehension works. ठीक है। इसमें क्या होता है, with loops पहले खाली बनाओ फिर डालो, we do all these steps, right? This it's direct list के अंदर एक list बन जाता है, ठीक है। Just by comparison you can see all this, ठीक है। Now you can also read फर्स्ट लेटर ऑफ ईच प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ नहीं है, सेम है। हम एक एक वर्ड चल रहा है, ठीक है। अब उस वर्ड के साथ तुम कुछ भी करो, जैसे उस केस में मल्टीप्लाई किया था, इसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब सारे नंबर्स निकालने हैं तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं, एक एक करके रीड करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लूप में लॉजिक लगा दिया, अगर कोई भी डिजिट है इस डिजिट फंक्शन यूज करके, देन प्रिंट इट आउट, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, हैवी कंडीशंस भी। जैसे अगर हमने ये चेक करना है, अच्छा ये क्रॉकरीज हो, ठीक है। अगर क्रॉकरीज है तो 20 है, ठीक है। एल्स ये 15 है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, इफ p इज इक्वल टू अपैरल्स, तो वैल्यू 10 जाएगी, इसमें उल्टा लिखते हैं। तो 10 इफ वैल्यू इज दिस, एल्स 15 अगर वैल्यू ये नहीं तो 20 फॉर ऑल द वैल्यूज इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यू कैन ऐड कंडीशन एट द स्टार्ट, यू कैन ऐड द कंडीशन इन द बिगिनिंग, ओके फाइन। Everyone with me till now? Okay, let's have quick, attendance for today. So today is what? 19th April. So
Okay, Sahil is present. Shubham, are you there? Shubham is not there. Was he there in the class? Shubham was, I don't think so, he was there. Quick absent. Rupika is present. Mridul, I don't think so, is present. Ajit Ajit is present, sorry. Faz is present. Akansh, Shalok absent. Samrat present. Joy. Rajneesh, are you there? I think he was there today, or no? Vinay absent, present. Gaurang present. Chaitanya present. Abhinav was not there today, I guess. Guys, attend these sessions. These will be very helpful for you. Like, okay. Okay, cool. Uh, that's all for today. Okay. And just to cover it up, just read about this list comprehensions. Okay. That's like the end of the things. Uh, Nothing different, but you should try on all these codes. Okay. And share those notebooks in the group. By tomorrow morning, you should all have tried all the code which is there in this particular note. Okay. ये पूरा पूरा एज इट इज जितनी भी स्लाइड्स हैं तुम्हारे एलएमएस में है. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्या करना है, जस्ट करना है काम. ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें. आई एम अपलोडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स टू ड्राइव. ओके, तो आई विल अपलोड इट जस्ट राइट अवे. Okay, so you'll get the notebook right away. Any questions, anyone? Let's drop off the session else. Okay, cool. So thanks everyone, and practice, practice, practice. That's what will make you perfect. Programming is really interesting, and I hate the way and we have to actually teach programming. Okay, I'll only guide you how to program when you are stuck. Okay, all the other things you should be able to figure out yourself. That's the way you should learn programming. If तुम किसी को बोलो यार मुझे प्रोग्रामिंग सिखा दे, वो तुम्हें बेसिक बता देगा, हाँ वेरिएबल क्या है, लिस्ट क्या है. वो तुम्हारे लिए कोड कभी भी नहीं करेगा. वो यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन, एंड दैट्स हाउ यू विल डू इन एनी कंपनी एंड एवरीवेयर. ठीक है, तो कोई नहीं. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिसने नहीं की प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ. ठीक है, एंड विद दिस लेट्स एंड द सेशन. वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स ऑफ पाइथन. टुमारो विल कवर lambda functions, and then we'll move to advanced numpy and pandas. Okay, great. Okay, thanks everyone. Have a great day ahead. Bye bye.